Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, resources and their types, and today is its third lecture. So my dear students, before moving on towards the main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. As you all know that we are talking about different types of resources and we have studied about natural resources. So quickly tell me, what is a natural resource? Very good. हमने पढ़ा था ना natural resource के बारे में. So anything that exists naturally or exist in the nature, naturally exist in the nature is called a natural resource. So now quickly, what benefits do we get from animals? क्योंकि animals एक natural resource हैं, so जल्दी से आप मुझे बताएं कि आप animals से कौन कौन से benefits हासिल कर रहे हैं, क्या क्या फायदे होते हैं हमें. We get different dairy products, we get poultry like eggs from them, and we also make leather from their skin. So a lot of benefits. So now list some natural resources. ठीक है, अब आपको मैंने animal as a natural resource, हमने उसके benefits हमने just discuss किए हैं. अब आप जल्दी से मुझे list down करके बताएं कि कौन कौन से natural resources हैं. Plants, animals, sun, soil, water, air, a lot of natural resources. Okay, my dear students, now let's quickly move towards an activity so that we will start our lecture. So my dear students, आज हम क्योंकि human resources के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या आप किसी ऐसे बंदे से आज मिले हैं जिसने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड की हो, जैसे कि you came in the bus or in a rickshaw or in a taxi, तो आप किसी ड्राइवर से मिले हो. इसके अलावा क्या आप किसी कैफ़े या बेकरी के पर्सन से मिले हो जिसने आपको चीज़ें दी हो वहाँ. इसके अलावा क्या आपने किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा, और हैव यू मेट योर टीचर येट. सो ऑन बस, एट कैफे, ऑन रोड्स, at your school, you meet different persons who provides you with different services. Basically, these are the human resources क्योंकि ये हमारे बहुत से काम आसान कर देते हैं. आपको जो बस ड्राइवर है वो आराम से आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर चला जाता है. जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं वो आपको डिफरेंट चीज़ें सेल करता है. इसके अलावा रोड्स के ऊपर अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो देयर विल बी नो लॉज. आपकी ट्रैफिक कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. सिमिलरली आपकी टीचर्स जो हैं वो आपको डिफरेंट एजुकेशन और आपको फैसिलिटेट करते हैं आपके स्कूल के अंदर. इसी तरह जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पीपल. सो दैट इज वाई हम इनको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स क्विकली लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स गिवन ऑन पेज नंबर 13. सो आइडेंटिफाई ह्यूमन रिसोर्सेज, फार्मर्स, बिल्डर्स, पेंटर्स एक्सेट्रा. तो आज जितने भी लोग हमें जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's quickly look at the Islamic perspective. He created the heavens without any visible support, and he placed firm mountains on the earth in case it should shake under you, and he spread all kinds of animals around it. We sent down water from the sky with which we made every kind of good plant grow on earth. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि उसी ने आसमानों को सतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको हिला हिला ना दे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए. और हमने आसमानों से पानी नाजिल किया, फिर उससे हमने हर किस्म की नफीस चीज़ें उगाई. तो आप देखें कि आपके गिर्द कितने जो हैं वो रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, एंड दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. Okay, my dear students, some pre-reading questions. Quickly name some natural resources. आज पहले से हम natural resources के बारे में पढ़ चुके हैं, like air, water, sunlight. These all are natural resources. So, my dear students, now quickly open page number 16 in your books. I hope everybody has opened page number 16. So my dear students, you will put your fingers where I will read because we are about to read about the human resources. So human resources. People who work to provide goods and services are called human resources. Technology has changed
the world, but the importance of human resources is still on top of it. Human resources are of various kinds. Some of them are discussed on the next page. So my dear students, हमारा जो दुनिया है वो बहुत तेज़ हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है, बट स्टिल आपके पास जगह जगह कंप्यूटर्स हैं, रोबोट्स हैं, बट स्टिल ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो स्टिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर चीज़ के टॉप पे हैं, बिकॉज विदाउट ह्यूमंस योर वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव और एक्सेल. सो हम अब कुछ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे. क्विकली ओपन पेज नंबर 17. I hope everybody has turned to page number 17. So first human resource is farmers. Quickly let's read about it. Farmers are the backbone of our society because they work day and night. They grow food and cash crops. They also rear animals. We get meat and milk from these animals. So my dear students, here on the screen you can see farmers in the field. आपको नजर आ रहा है कि even there is machinery here जो कि आपके फील्ड्स के अंदर जो है वो आपको क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करती है. आप ये हेयर यू कैन सी दिस पर्सन इज स्प्रेइंग. सो आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आप डिफरेंट गैजेट्स को और डिफरेंट मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल ह्यूमन जो रिसोर्स है, जैसे कि दिस वुमन इज सोइंग सीड्स, ही इज स्प्रेइंग, दिस मैन इज ड्राइविंग द ट्रैक्टर. सो आपकी फार्मर्स जो है जो कि क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो जो हमारे घर में खाना आता है या रोटी पकती है वो कहाँ से पकेगी. सो दीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जो कि हमारे लिए बहुत से काम करते हैं. इवन दे रियर द एनिमल्स, फार्म एनिमल्स को ये अपने पास रखते हैं और हम उनसे गोश्त और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं. ओके, नेक्स्ट कम बिल्डर्स. अब सबसे पहले आप ये सोचें कि जिस बिल्डिंग में अब आप अपने घर में बैठे हुए हैं या स्कूल में बैठे हुए हैं, ये किसी ना किसी ने तो बनाई है ना ये बिल्डिंग. सो दीज बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय द बिल्डर्स. सो ये एक और ह्यूमन रिसोर्स हो गया कि वो आपको हेल्प आउट करें, आपके लिए बिल्डिंग्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, प्लाजाज बना रहे हैं. सो लेट्स क्विकली रीड. द बिल्डर्स आर मेसन एंड लेबर. दे आर हार्ड वर्किंग पीपल in our society. They construct houses, schools, roads and masjid for us. आप देखें कि बिल्डर्स जो है कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बिल्ड कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रोड नहीं प्रॉपर होगी तो आप किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे. अगर बिल्डिंग नहीं होगी, आपका घर नहीं बनेगा, तो आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे. सो दीज पीपल आर बेसिकली द ह्यूमन रिसोर्सेज. जो भी इंसान आपकी बेटरमेंट के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई काम कर रहा है, दैट पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स. Okay, now let's quickly move forward towards the next resource. Painter. A painter is a person who uses paint to draw pictures and shapes of different objects and places. Some of the painters are trained from art schools and others learn naturally. अब जो भी शख्स पेंटिंग करता है, कुछ ड्रॉ करता है, पेंट्स को यूज़ करता है, दैट पर्सन इज अ पेंटर. आपके ट्रक्स पेंट हुए होते हैं, आपने डिफरेंट फ्लेक्स पेंट हुए हुए देखे होते हैं, बोर्ड्स पेंट हुए हुए होते हैं. इसके अलावा इसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी मिलती है आर्ट स्कूल्स के अंदर. सो दीज पेंटर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स मैकेनिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है. लेट्स क्विकली रीड अबाउट अ मैकेनिक. A mechanic is the most trained person who check, maintain and repair cars, trucks and other vehicles. Some mechanics are licensed from a registered school of mechanics under vocational education. So my dear students, अब अगर आपको एक जगह से टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, बसेस हैं, शिप्स हैं, कार्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. इनकी मेंटेनेंस के लिए या अगर इनके अंदर कोई ख़राबी हो जाए तो इनको रिपेयर करने के लिए आपके पास मैकेनिक है. सो ये मैकेनिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो फिट और मेंटेन रहें. Okay, my dear students, now it's time for the practice. Let's quickly move towards the practice. आपको इस practice के लिए जो है worksheet number 3 provide की जाएगी by your teacher in print form, or you can simply download it from the description box below this video. So my dear students, first of all, you will write down your name and your class here.
Then human resources. So what is a human resource? Human resources are the people who use their skills to produce a good or service. So ऐसा आदमी जो कि आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है या आपकी लाइफ को इजी बना रहा है, दैट पर्सन इज अ रिसोर्स और उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कह देते हैं. सो डायरेक्शंस ये है कि नेम सम ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो राइट हाउ दे बेनिफिट अस. ठीक है, यहाँ आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के नेम्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी डू द फर्स्ट वन फॉर यू. डॉक्टर. सो नाउ हाउ व्हाट ही प्रोवाइड्स यू, कौन सी सर्विस जो है वो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करता है, मैं अब इस बारे में आपको आई डू द फर्स्ट वन फॉर यू. बाकी ह्यूमन रिसोर्सेज और सर्विसेज आप खुद करेंगे. ठीक है. सो he provides us or he gives us treatment when we are ill. तो जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. सो ये एक सर्विस हो गई और इस तरीके से ये आपको डॉक्टर्स जो हैं वो हेल्प आउट करें. नेक्स्ट आप ह्यूमन रिसोर्सेज में टीचर्स के बारे में लिख सकते हैं, शॉपकीपर्स के बारे में लिख सकते हैं, इसके अलावा पुलिसमैन के बारे में लिख सकते हैं. सो देयर आर मेनी ह्यूमन रिसोर्सेज अराउंड यू जिनको आप इवन द हाउस हेल्प एट योर होम or a PN at your school or a security guard at your school or in your street, आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं because they all are human resources. So you will complete this worksheet and you will submit it to your teacher. And now we will move forward towards page number 26 of your books. And here is written exercise given. और इसका आप question number 2 जो है अपनी notebooks में करेंगे. So what is question number 2? How do farmers contribute to a country? तो जो आपके किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं वो कैसे आपके मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. दे रीप क्रॉप्स फॉर अस एंड दे ऑल्सो रियर different farm animals for us and they provide us with different kinds of food. So you will write down the answer in your notebooks. Okay. So from here we will move forward towards your evaluation. So the listening and speaking questions are given on page number 24 and here are the questions. What is a human resource? The services provided by the humans, they are goods provided by the humans are called human resource. So how human resources are different from natural resources? अब किस तरह जो है वो natural resources और human resources जो है वो different हैं एक दूसरे से. Natural resources are the things which exist naturally. And human resources are the services provided by the human beings. So this is the difference between human resource and natural resource. List some human resources. Farmers, painters, doctors, teachers, shopkeepers, painters, lawyers, policemen. These all are human resources. What services are provided by the farmer, builder, carpenter and mechanic? One by one हम इनकी services को discuss कर लेते हैं. Farmer, he reap crops for us. Next, the builder, he builds building for us. Then next is carpenter, he makes our furniture. And a mechanic, he repairs cars for us or our vehicles for us. Okay, so these are the services provided by all these human resources. Okay, my dear students, now is the time for homework. Quickly note down your homework given on page number 18, independent activity number 2. Very easy. Observe your surrounding keenly. Write the names of 3 human resources in the table and explain how do they provide services. आपने अपनी surrounding को जो है वो observe करना है. अभी आपने worksheet में भी किया. तो आप यहाँ पे 3 human resources को लिखेंगे और उनकी services को आगे discuss करेंगे. Like your teacher, a doctor, a policeman. So you can do this. Okay, अगर आपको ये page enough नहीं लगे, these boxes, this table is not enough, so you can use your notebook also. आप इसी तरह का table draw करें and you can easily use your notebook. Next homework, so now is the time for wrap up. People who made efforts to provide goods and services are called human resources such as farmers, painters, doctors, etc. Okay, so my dear students, I hope you have
understood about the human resources now, and you are well aware about all the services provided by different human beings around us. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.